अस्सलाम वालेकुम। One, two, three, four, five, six. Okay, students. Today we are doing exercise 5.5. Exercise 5.5. Integration by substitution method. Page 374. Exercise 5.5. Page 374. Question number 1. Integrate sine 3x dx. We will use the substitution method. 3x will be considered as u. Let u is equal to 3x. Integrate u with respect to x. So du upon dx will be equal to 3. Du upon dx will be equal to 3. Dx will be shifted on the other side and 3 will shift it over there. Dx will go there and 3 will come over there. So du upon 3 is equal to dx. Du upon 3 is equal to dx. Now we will replace 3x and dx. Therefore, it will become sine u. 3x is equal to u. Sine u dx is du upon 3. 3 is constant. It will become 1 over 3 sine u du. 1 upon 3 sine u du. So we have to take the integration of sine u with respect to u. Remember, when we are substituting, we are replacing x. So there must be no x. After substitution, there should be no x remaining in the integration. Otherwise, we will not be able to solve it. Otherwise, we will not be able to solve it. If there are u and x, the two variables, there must be only one variable, either x or either u. For Zafar 63053 09. So must remember, when we are substituting, there should be no x again, only u. There should not be the two variables. There should be only one variable. Now the integration of sine u with respect to u will be equal to minus cos u. 1 over 3 minus cos u. This is the integration of sine u. Because the derivative of cos u is minus sine u. The derivative of cos u is minus sine u. If minus is there, that will be shifted over on that side. And plus some constant. When this is the indefinite integral,
If it is the indefinite integral, so we have to add plus c also in the integration. So it will become minus 1 over 3 cos u plus c. Now replace u by 3x because our question was in x, not in u. So replace u by 3x. Replacing or substituting, it will become minus 1 over 3 cos 3x plus c. Minus 1 over 3 cos 3x plus c. This is the answer, final answer. This is the final answer. Understood all of you? Talk to me. No, sorry. So this is the final. Anything do you want to ask? You may ask right now. This is the substitution method. We use substitution to solve this question. We can do this directly also. And generally, I do directly for such a small question. How to do directly without substitution I am doing. Integration of sine u is minus integration of sine 3x will be minus cos 3x divided by the derivative of 3x. What is the derivative of 3x? Is 3 and plus some constant. So now I may write it minus 1 over 3 cos 3x plus c. So this is the direct. Small questions may be done directly. Small questions may be done directly. Now I will do question number 2. Question number 2. Question number 2. Integrate x sine 2x square dx. X sine 2x square dx. If we observe it, so generally it is looks like u
into v. There are two functions, x and sine 2x square dx. But if you do the substitution method, it will be easy for you. So this will be considered as u. U will be taken as in the what is the if this is the algebraic function, the whole power n. So what is inside the bracket, what is inside the whole power, that will be considered as u. If it is trigonometrical function, so what is for theta, that will be considered as u. If there is sine square, don't take sine square, only sine. If there is no sine the power, this is sine 2x square, so we will take 2x square. If it is 2x square plus 3x plus 5 etc., so we'll take that one, sine of 2x square plus x plus 5 etc. So that what is inside the bracket, that will be taken as u, 2x square plus 5x plus whatever it is. Now in they differentiate, du upon dx will be equal to 4x. It will be equal to 4x. Now 4 is shifted over there and dx will be shifted over there. Du upon 4 is equal to x dx. Du upon 4 is equal to x dx. Use it in the formula. Therefore, sine 2x square, that will be taken first. Sine u. Then x dx. X dx will be taken du upon 4. So it became 1 over 4 is the constant, sine u du. Again, integration of sine u will be minus cos u. 1 over 4 into minus cos u plus c. Minus cos u plus c. Replace u by 2x square. Plus minus minus. Minus 1 upon 4 cos 2x square plus c. Minus 1 upon 4 cos 2x square plus c. This is the answer. Another question, question number 4. 1 minus cos 1 upon 2 whole square. 1 minus cos t upon 2 whole square into sin t upon 2 dt. Into sin t upon 2 dt. Anything do you want to ask in this question? Clear everything? Okay.
integrate 1 minus cos t upon 2 whole square sin t upon 2 dt. Again, what is inside the bracket, that will be considered as u. So let u is equal to 1 minus cos t upon 1 minus cos t upon 2. This will be considered as u, what is inside the whole square. So du upon dt, remember there is no x, the variable is t. So we have to take with respect to t. We will differentiate with respect to t. It will become the derivative of 1 is 0 minus derivative of cos t upon 2 will be minus sin t upon 2 into the derivative of t upon 2 will be 1 upon 2. The derivative of t upon 2 will be 1 upon 2. So minus minus plus du upon dt will become 1 over 2 will be written, minus into minus will be plus. So 1 upon 2 sine t upon 2. So dt is multiplied over there, 1 over 2 will come over there. So it will become 2 du is equal to sine t upon 2 dt. When 1 upon 2 will come over there, it will become 2 upon 1. Or we have to divide by 1 over 2. Du, this is being multiplied over there. So when it will come, it will divide du upon 1 upon 2. It will become 2 du. And dt will go on the other side, sine t upon 2 dt. So that's it, replaced by 2 du. And this will be replaced by u square. So therefore, it will become u square and sine t upon 2 dt will become 2 du. 2 is constant, it will be outside. G square du. So integrate to u square. The integration of u square will be u cube upon 3 plus some constant. Now u will be replaced by 1 minus cos t upon 2 and 2 upon 3 is constant. It will become 2 upon 3 into u is replaced 1 minus cos t upon 2 whole cube. This is cube. 2 upon 3 is outside plus some constant. This is the final answer. 2 upon 3, 1 minus cos t upon 2 whole cube plus c. This is the final answer. Understood? Question number 6. Question number 6.
एनीथिंग? कुछ पूछना है बेटा? नहीं? क्वेश्चन नंबर 6, x cube into x4 minus 1 whole square dx. x cube into x4 minus 1 whole square dx. तो इसमें भी हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. x4 minus 1 is considered as u. x4 minus 1 will be considered as u. दूसरा तरीका यह है कि चूंकि स्क्वायर है, कोई लंबी चौड़ी पावर नहीं है, तो इसको हम ओपन भी करके एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व कर सकते हैं. इसको ओपन कर ले, x4 माइनस 1 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा के और फिर उसको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर ले. और ये अगर सब्स्टिट्यूशन से करते हैं तो ये ज्यादा इजी रहता है. इसमें क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा इजी रहेगा या ओपन करने पर. सब्स्टिट्यूशन से मेरे ख्याल से ज्यादा इजी रहेगा ये. तो इसको जो भी ब्रैकेट के अंदर है होल स्क्वायर, इसको हमने यूज सपोज कर लेंगे व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, नॉट ओवर द होल वन. लेट u is equal to x4 minus 1. डिफ्रेंशिएट करें इसको, du upon dx will be equal to 4x cube. 4x cube. dx को उस तरफ ले जाएं, du upon 4 is equal to x cube dx. du upon 4 is x cube dx. तो ये हम रिप्लेस कर देंगे. ये पहले लिखा जाएगा x4 minus 1 whole square, that will be u raised to power 2. Therefore, this is u raised to power 2. x4 minus 1 u है, power 2 है. x4 minus 1 is u, so u raised to power 2 into x cube dx. x cube dx du upon 4. It will become du upon 4. One upon 4 is constant. It will become u square du. 1 upon 4 is constant. It is u square du. इसको इंटीग्रेट करें, u square u cube upon 3 plus some constant. So it will become 1 over 12. 4 into 3 will be 12 और u क्या हो जाएगा, x4 minus 1 whole cube, this is cube, plus c. This is the final answer. This is the final answer. 1 over 12 x raised to power 4 minus 1 whole raised to power 3 plus c.
नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कुछ पूछना तो नहीं है बेटा? कुछ पूछना तो नहीं है आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 7। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट 9r square dr divided by under root 1 minus r cube 9r square dr upon under root 1 minus r cube. अंडर रूट का मतलब पावर 1/2. It may be written as raised to power 1/2. 1 minus r cube. अरे बाप रे बाप. It will be shifted upside. One minus r cube raised to power minus 1/2 into 9r square dr. एक चीज याद रखिए बेटा, dr, dx, du एक्सेट्रा वो सब आखिर में लिखा जाता है फंक्शन के टर्म के आखिर में. टर्म के आखिर में लिखा जाता है, पहले नहीं लिखा जाता. पहले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, बिकॉज दिस dr इज शोइंग विद रिस्पेक्ट टू r. और वो हम आखिर में कहते हैं डिफरेंशिएट इंटीग्रेट दिस वन विद रिस्पेक्ट टू r. वो हम आखिर में कहते हैं. तो हर चीज के कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसूल होते हैं. जैसे आप इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश है या उर्दू है, उसमें आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप वर्ब देंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट देंगे. इस तरह इसमें भी यही होता है. मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी विद रिस्पेक्ट टू जो है हम आखिर में लिखते हैं, पहले नहीं लिखते. इसी तरह किसी को इंटीग्रेट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसको भी नीचे होगा और उसको आखिर में पढ़ेंगे. dy अपॉन dr, इसका मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r. डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू r, तो नीचे वाला आखिर में पढ़ा जाता है. इसी तरह इसमें इंटीग्रेशन में भी विद रिस्पेक्ट टू आखिर में पढ़ा जाएगा और उसको आखिर में लिखेंगे. पहले लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. तो जिस तरह आपकी लैंग्वेजेस में कुछ उसके ग्रामर है, तो इसी तरह इसमें भी कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं. इसके अपने ग्रामेटिकल रूल्स हैं मैथमेटिक्स के. जैसे 2 के बाद 0 लिखेंगे तो वो 20 पढ़ा जाएगा. 2 से पहले 0 लिख देंगे तो वो 20 नहीं पढ़ा जाएगा, वो 2 पढ़ा जाएगा. वो 2 पढ़ा जाएगा. अगर पहले आपने 0 लिख दिया 2 से, तो 2 के बाद 0 लिखेंगे तो वो 20 पढ़ा जाएगा. तो इसमें भी dr, dy, dx डिफरेंशिएशन में आखिर में लिखा जाता है. किसी टर्म की आप मैं बात कर रहा हूं, हर टर्म के आखिर में. और अगर बहुत सारी टर्म में सबके साथ dx है या dr है, तो हम वो कॉमन लेकर ब्रैकेट के बाहर राइट साइड पे लिखेंगे आखिर में.
So this is the rule. Okay, now we'll consider is 1 minus r cube as u. Du upon dr. 0 minus 3r square. 0 minus 3r square. अब ये हो जाएगा minus 3r square only. So du upon dr, because we are differentiating with respect to r. So du upon dr. 0 minus 3r, this will be minus 3r square. माइनस 3 को यहां ले आए, dr को उस तरफ ले जाएं. So it will become du upon minus 3 into r is equal to r square dr. Now r square dr will be replaced by du upon minus 3. ये तो whole r square dr will be replaced by du upon minus 3, or 1 minus r cube will be replaced by u. Therefore, u raised to power minus 1 over 2, u raised to power minus 1 over 2, 9 into 9, और r स्क्वायर du अपॉन माइनस 3, ये भी ब्रैकेट में डाल दें या मल्टीप्लाई कर दें, du अपॉन माइनस 3, 3 3s are 9, so plus minus minus, so minus 3 आउटसाइड आ जाएगा, it will become minus 3, और यहाँ u raised to power minus 1 upon 2 du. minus 3 integral u raised to power minus 1 over 2 du. अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, because now there is only u. So minus 3 और इसका इंटीग्रेशन u raised to power minus 1 over 2 plus 1 divided by minus 1 over 2 plus 1 और plus c. It will become minus 3 into